morning, Bache. Today I am going to talk about this super tricks of trigonometric ratio, which you can solve, which you can remember within your lapse of time, within 2 or 3 seconds if you will habituated by these figures. If you are acquainted these figures, ये फिगर के साथ एक बार अकाउंटेड हो जाओगे तो 2 और से ज़्यादा 3 सेकंड में ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो 30, 45 एंड 60 का रेशियो आप निकाल सकते हैं, याद रख सकते हो। ठीक है बच्चे, तो ये बहुत टाइम सेविंग है एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओनली टू फिगर्स, ये 2 फिगर को याद करेंगे तो सब हम निकाल सकते हैं, ये 30, 45 एंड 60 विद इन यर लैप्स ऑफ टाइम। लेट अस स्टार्ट दिस वन। सो आई हैव ड्रॉन हियर 2 फिगर्स, नंबर 1 एंड नंबर 2। 2 फिगर्स हम ड्राइंग किए हैं। नंबर 1 इज योर दोनों right angle triangle, as we know that this is a perpendicular base, hypotenuse, perpendicular base and hypotenuse. Let us take this be 60 degree and let us take this be 30 degree. Now in this case let us take 45 degree and this is also 45 degree. ठीक है बच्चे, तो ठीक यह इस ट्रायंगल में हमें 60, 30 एंड 90 बनाया एंड ये ट्रायंगल में हमें 45, 45, 90 बनाया। तो सी इन दिस केस दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, इज इट राइट? नाउ लेट अस स्टार्ट। सो सी व्हेन वी नो दैट sin theta is equal to p by h, cos theta b by h and tan theta p by b, cot theta b by p and likewise. So let us start. Now suppose we are talking about sin 30 degree. When we are talking about sin 30, जब हम sin 30 का बात करें तो this will be p and this will be b फॉर साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री के लिए ये p हो जाएगा एंड ये b हो जाएगा, तो साइन 30 p बाई h, तो 1/2। देन cos 30 डिग्री b बाई h, दैट मीन्स √3/2। ओके, नाउ सी sec 30 opposite of cos 30 we can write 2/√3 and cosec 30 degree opposite of sin 30 degree, that means 2/1. Okay friends, now let us see tan 30 degree. So tan 30 degree p by b, that means 1/√3. Again cot 30 degree b by p, that means we can write 3√3/1. Okay, so you can also remember the opposite of tan theta is 1/√3, 0√3/2. So sin theta opposite of cos theta and cosec theta and cos theta is opposite of sec theta. Now let us come to sin 60 degree. In this case you see friends, if when we are talking about, let us wipe this one, when we are talking about sin 60 degree, then हम जब 60 का बात करें तो ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा b and this h is constant. So sin 60 p by h, sin 60 degree p by h, that means √3/2. cos 60 degree b by h, that means 1/2. and tan 35 degree you can say tan 60 degree p by b, tan 60 p by b and cot 60 degree b by p, that is 1/√3. and sec 60 degree is equal to opposite of cos 60 degree and cosec 60 degree is opposite of sin 60 degree. Okay, done. Now let us come to figure. अभी हम फिगर 2 का बात करेंगे. So let us, in this case this is your 40 and 50 and this is p is constant, no changing. Here b is also constant and this is your value of h. Okay, let us see this one. So sin 45 degree p by h, sin 45 degree p by h, that is 1/√2. cos 45 degree b by h, that is again 1/√2. sec 45 degree, sec 40 opposite of what? Cos, so we can write √2/1. cosec 45 degree, that means h by p, we also write can √3/1. now let us see tan 45 degree p by b, that is 1/1. cot 45 degree b by p, opposite of tan, that is 1/1. so done. let us see how only 2 सेकेंड हमारा काम फिनिश हो गया। अभी देखो क्या करेंगे, जो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको मिटा देंगे। अभी ये 1 है, डिनोमिनेटर 1 है
this was one denominator, denominator is 1 here is denominator 1, here is also denominator 1, in this case denominator 1, done. So you see, within, let us take within 5 minutes, so this is solved. I am making you understand, हम अभी देखा आपको समझने के लिए बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट आप जो प्रैक्टिस कर दो ये याद रह जाएगा। आप सिंपल आइडिया रखो, √3 2 1 p 1 1 2 2, ये याद रखो, बस इतना है। p √3 1 2 1 1 2, बस। आप देन पुट द रेशियोज ऑफ दिस trigonometric ratios, use 6 and you will get 30, 45 and 62 within a span of time. This is all about these short tricks and super tricks we can say. I think it will help you a lot. Thanks.